अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने अग्निपथ स्कीम का दिफा करते हुए कहा कि ये स्कीम महज माहाना तनख्वाह या नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि वतन की मोहब्बत से सरशार और जहनी व जिस्मानी तौर तंदुरुस्त नौजवानों के लिए वज़ा की गई है। अजीत डोभाल ने कहा है कि आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी में रोज़ अफजो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही है, वहीं मुल्क के इर्द गिर्द का माहौल भी तब्दील हो रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी एतबार से मुल्क की सलामती के लिए तब्दीलियाँ और नई पॉलिसीज़ मुरतब करना नागुज़ीर है। एक खबर रसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अजीत डोभाल ने कहा है कि जवान पैसों, तनख्वाह और मराहत के लिए फ़ौज में भर्ती नहीं होते। फ़ौज में भर्ती होने के लिए हब्बुल वतनी का जज्बा लाजमी है। अग्निपथ स्कीम को भी माहाना तनख्वाह हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की सलामती के मद्देनज़र वज़ा किया गया है। टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की हो रही है। अगर हम वही करते रहे जो हम गुज़िश्ता कल कर रहे थे, तो ये मुमकिन नहीं कि हम महफूज रहें। अगर हम आइंदा कल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें बदलना होगा। अग्निपथ के खिलाफ हो रहे एहतजाज से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने कहा कि एहतजाज और एतराज़ फितरी तकाजा भी है और कानूनी हक भी। ताहम एहतजाज के दौरान अमन और कानून या मुल्क की सलामती को किसी भी सूरत हाल में ज़ख्म पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अग्निपथ को कल अदम करार दिए जाने को यकसर मुस्तरद करते हुए डोभाल ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था। उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। एक बात, जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है। अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं। ये जो रेजिमेंटल, कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है। पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं। और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट, नॉट एन अहीर और राजपूत। और ये नहीं थी। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था। वो भारत के लिए लड़ रहे थे। दे वर द सोल्जर्स ऑफ द इंडिया, दे कॉल्ड देमसेल्व्स द इंडियन नेशनल आर्मी। That's right. So they will continue. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना ट्रेडिशन होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपना एक वेलर है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अब इसका और हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, इनके अंदर में गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका। ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के, धर्म के, क्षेत्र के लोग हैं। हमारे जो परमवीर चक्र जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि
कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, every youth of this country who has got a desire and a motivation and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is poured towards making this country strong and impregnably defended. I think that the protest or the raising a voice, expressing your thing is justified and is permitted in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. You understand that, or don't you see the fear that ये जो internal security को जरा भी disrupt किया जाए, even in pockets, जैसे आपने CAA stir में देख लिया, उसके बाद hijab remarks हो जाती हैं, well maybe not the hijab and the prophet remarks, but CAA stir and the agriculture reforms की जो laws थे, अगर इसमें क्या होता है that the word goes out that on the street that if you push the government, if you push the security establishment to a certain extent with street protests, there could be a rollback. So is there any chance that because of these street protests, there could be a rollback to the Agnipath scheme? There is no question of any rollback. There is no question. It is. Let me tell you one thing. This is not something which is a knee-jerk reaction which has come overnight. This has been being debated and discussed for decades. In 70s, we had General Krishna Rao Committee, of which General Sundarji, General Chibbar, they were the members. They talked about reorganization and reforming of the army, including the manpower policy, technology and others. Youth who feel disillusioned and disheartened that maybe some of them were part of the protest, regret it and would like to take the Agniveers. Is it over? Are the doors shut for them? Well, as far as the message to the youth is concerned, ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सेना में जो लोग जाते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक जज्बे के साथ जाते हैं, उनमें देश प्रेम होता है, उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है, उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकें। अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने। इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं। आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, यह आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है, और मेरा सारे यूथ को इस देश के उससे यही है, मेरा मैसेज यही है, पॉजिटिव हों, बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन द नेशन, हैव फेथ in your leadership, when you join the army and others, the leadership there, have faith in the society and have faith in yourself. That is the most important thing. स्वामी विवेकानंद कहते थे, पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है। You can conquer the world. The whole world is for you. Kashmiri Hindus, especially the Pandits, they feel very let down, to some of them, that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream, that those who have supported Mr. Modi, the BJP and this government all through, that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the real feeling of all Kashmiri Pandits or people who have been displaced. But yes, they are a vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done, and that is being done. We have got to see that wherever they are and whatever protection they require, because they can be the soft targets and no government will be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places. So we have to find out the systems, and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their lives or their properties and others, they are accounted for. Because we saw that when Article 370 was taken back, you went there, you went to Kashmir, you spoke to the people. We saw that happening. What do you have to say
to people who are victims of these lone wolf attacks which are happening. Yes, I agree that that terrorism as such from Pakistan is gone, but then these are these lone wolf attacks, soft targets which are going. How will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is a problem of security, and we are dealing with it, and we are dealing with effectively. Firstly, you must understand one thing. Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see, where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are few persons and some individual tanzeems, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of their beliefs or whatever is that they want to be the Fidains and they want to come. They do create problems for us. We are fighting them. And we are fighting them with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. And terrorists, their equipment, their weapons, their explosives, their money, and we on all fronts are trying to tackle it. And we are very hopeful that in another few months we'll be able to do it. Where are we vis-a-vis China? It's now 2 years since the Galwan incident, and there seems to be an uneasy peace. Do you feel that China has put on hold its expansionist policy with regard to us, with regard to Indian territory? Well, we have got a long pending a territorial dispute with China. We have made our both intentions and this thing very clear to China, and they are aware of the fact that, well, we will not tolerate any transgression. There had been some unsavory incidents in 2020. We have been able to, through the talks, through the negotiations, through the persuasion and others, resolve some of it. Few points still remain to be resolved and others. We will continue our efforts. At the same time, we have got to ensure that is we are vigilant and we are able to protect our borders too. Maybe since he took office in 2014, there's been a doctrinal shift in India's relations with Pakistan since he's become Prime Minister, since you've been the NSA. You've seen several regimes change in Pakistan. Do you think, from a security perspective, is it possible for this kind of, I will not talk to you, you have to stop terror, till then I will not talk to you? And can nations prosper with that attitude going forward? Now, I'll tell you one thing. We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. Thank God, and I think I must this thing to the God. In last 8 years, this country has not seen any terrorist this thing except Jammu and Kashmir, which has been this thing of a proxy war. So it's a different type of a proxy war. Just before that, see, between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this whole range of this, Bangalore, Ahmedabad and other. What was the whole range of this thing the country was being this way? If we were not firm, if we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace at any terms. फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।
आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।